Is he? It's a rock. Right? It feels like a rock. It's smaller. Starfish. For you, you feel that. ईगल्स आती हैं और फिश को पकड़ती हैं और उड़ जाती हैं, और जितनी देर उड़ती रहती हैं उतनी देर वो खाती रहती हैं। जब ख़त्म हो जाता है तो वापस डाइव मारती हैं और फिश को पकड़ के चली जाती हैं। क्रोकोडाइल केव है, बट यहाँ पर कोई भी क्रोकोडाइल नहीं है, इसे बस बोलते हैं क्रोकोडाइल केव। मैंग्रोव टूर का फर्स्ट स्टॉप ओवर होता है फ़िश फार्मिंग पॉइंट पर। यहाँ पर बहुत सारे फिशरमैन्स इस तरीके के हाउसेस बना के रहते हैं और यहाँ पे फ़िश फार्मिंग करते हैं। And they are very friendly stingray until the people here give them names. स्टिंगरे है पीछे और इसको भी लोग खाना खिलाएंगे। Maybe, and then I'm not really sure what they are. Yeah? And you can see how they have the spot there, the one that I say poisonous. It feels like an elephant. Are you not touching it? You're not? I think food poison. This is like lunch. People's lunch. Lunch. They're very famous in the Japanese restaurant. Yeah, they cut it. They're Okay, venom, look right? at it. That be the starfish. Is it alive? Okay. It start penetrating my arm. Eating you? Wanna take over? He is alive? Yes. Until now, yes. Still alive. You can feel him being alive. It's moving, yeah? Is he? It's a rock. Right? It feels like a rock. Yeah, it is. They just they're making us full. For the size of it, even if it does smoke, you won't feel it. Yeah, if it's smaller, Starfish. for you, you feel that if you turn it over, like Mini your legs, mouth, okay, and also that will be the legs. What happens is when they got anything, they're gonna spread open inside out. That will Spread the leg pour some open, eh? acid into the prey. They're looking for prey. Where are the eyes? They don't have eyes. It's blind, like a mole. The eyes on the top. Okay. Like a snail. Okay, and of course.
doesn't count our surface. Okay. Well, that's the thing for sea bass. If we go and catch them, see the way they respond, that is going to be very good, yeah. And they can give also a very good fight. But this kind of fish. We are going inside the bat cave now. अंदर पूरा डार्क होगा तो इसलिए मैंने टॉर्च भी ले ली है. बहुत ज़्यादा स्केरी है यहाँ पर. अकेले तो आ ही नहीं सकता मैं यहाँ पर. बहुत ज़्यादा स्केरी था, बहुत ज़्यादा. सारे बैट्स वहाँ पर ऐसे लटक के सो रहे थे और मतलब अगर सारे बैट्स अभी जग के सीधे जैसे बैटमैन मूवी में दिखाते हैं कि सारे बैट्स केव से बाहर आते हैं, तो बिल्कुल अभी ब्रूस वेन वाली फीलिंग आ रही है. इस आइलैंड के आसपास कोई भी नहीं रहता है, जस्ट बैट केव्स बना रखी है और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है. मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता यहाँ पर और ये मेन लंकावी मेनलैंड से काफ़ी दूर है ये जगह. बोट से अराउंड हमें लगे 2 घंटे यहाँ तक आने में. To go this way. Huh? We need to jump over it. Yeah. And then we have to go this way. Yeah. 'Cause that's what the staircase is. Yeah.